rockstar. Dale, vete rana que tú sabes más de la cuenta. No te hagas. Kiss me, baby, no te yes. Freak me, baby, yes, yes. Come freaky, baby. I'ma make sure that your bitch feels fishy, baby. No pushy bras. I like my women sexy, classy, sassy. Powerful, yes. They love to get a little nasty. Ow. This ain't a game, you'll see. You can put the blame on me. Dale, muñequita, ahora ahí. And let it rain on me. ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਾਥ
आगे से बीच में से मुझे 4 लगा दौड़ने लगी एक रात में हिला मुझसे होने लगी। मैंने बोला एक छोटी सी फाइट है, सुबह ठीक 6 बजे मेरी चंडीगढ़ की फ्लाइट है। स्केड्यूल थोड़ा टाइट है, कहती है आदित्य झूठ बोलने की भी एक हाइट है। कैसे बताऊं लाइफ झूठों से बनी, पी जहर के जो घूटों से बनी। मेरी ना किसी इंसान से बनी तो बस कब्रिस्तान के भूतों से बनी। मैं कभी बहुत ज्यादा सैड कभी बहुत ही फनी, मेरे कोई आर्ट के बैक कानों में टिफनी। मेरे और जीत के बीच कोई बट इफ नहीं टिप्पणी पे ना करूं टिप्पणी। तेरे जैसा कहाँ से मैं बस चाटता है तू, मैं ऊपर वाले से ब्रह्मांड मांगता फिर। कभी प्यार तो कभी ज्ञान बांटता फिर, जो भी चलता है उनको मैं छांटता फिरूं। हिट पे हिट मैं मारता फिरूं, दिन रात लगातार मैं जागता फिरूं। उसके साथ मेरी बनती है सही, उसे नचाने का शौक है मैं नाचता फिरूं। हमें डूबने का शौक था, उसे बचाना आता था। हमें मचने का शौक था, उसे मचाना आता था। जोड़ी क्या ही खतरनाक थी हमारी, कि हमें नाचने का शौक था, उसे नचाना आता था।
Buddy, you're a young man, hot man, shouting in the street. Gonna take all the world someday. You got blood on your face, a big disgrace, waving your banner on. एक मिनट में अभी नहीं आ रहा हूँ। पकड़ दीजिए बेलून छुड़वाना भी। शाम बटे जा। इसको साइड में रख, इसको हटा साइड में। Good evening to all. It is an honor to greet you guys on this special day when we will be displaying the talents and as we honor the students for their accomplishment on behalf of the St. Paul family, Nimbayada. I, Ravi Ragan, and my co-host Raiva Zanum extend a warm greeting to you all. We are very grateful for your presence. Yes, Ravi, you are correct. This is the day we always look forward to every year. It to be a day of happiness, success, and heritage. And to add to the delight of each day, we are gifted with the presence of renowned people. With a lot of excitement, we welcome you to this 15th annual day of St. Paul Secondary School, Nimbayada. सुख और दुख धूप और छाया की तरह सदा इंसान के साथ रहते हैं। लंबी जिंदगी के खट्टे मीठे पदार्थों के समान दोनों का साथ चखना होता है। सुख और दुख का साथ आज तक कोई नहीं मिटा सकता। So let us begin our program. अरे वो एक पोटरा पिन लगा के उधर रखे हो तो मुंह पोटरा का फटाफट जाओ। शाम पोटरा की पिन बटने लगा फटाफट। नीचे थी लंबी मत कर, डायरेक्ट पिन लगी दे। मुंडू ऊपर कर ले मेरे को। अरे मुंडू ऊपर कर ले खाली, बस लगा जल्दी लगा। अरे मुंडो ऊपर कर ले, नीचे कर ले। हमारे कैमरा में एरी मूर्ख। Darkness cannot be wiped out by blackness. Only a bright light can accomplish it. In the same way, let us hope that the light of education wipes out the darkness of injustice, aggression, and division in society and lead us towards growth, liberty, and equality. Now, I will witness an inaugural ceremony in a diverse way.
वो अबे लाइट सेट कर रोहित, तू वीडियो पे जा. The theme of this 15th annual day is life, living in fellowship every day, which is very simple word having vast meaning. Now, may I request the dignitaries to light the lamp. लाइट बजे हटाओ तो लाइट असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्यो असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय. Now, may I request the dignitaries and the guests to be seated. शान्ति शान्ति शान्तिः. Hey, what are you doing? I was praying. Can you tell me why do we pray? We do pray because prayer helps us to gain an understanding of God's loving nature. Oh, I understood. Do you know why do you begin any task with prayer? No, I don't know. Can you please tell me? We begin our work with prayer because by praying we praise God for His greatness and admitting dependence on Him. We thank God for His blessings. Oh, I understood. So let's begin today's program with prayer dance. Please give them a big round of applause. अब इनको एक्स्ट्रा सब हटे दो. कहीं भी बैठ जाने में शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते
हाँ नहीं है नहीं सर लगे तो पिन लगाने खाली Glad to witness this live great performance. Special thanks to you. Aditi Devo Bhav, which means guest and I got my name is Nusebaka from class 2nd. My name is Radhika from class 2nd. We would like to call me Sumakhi from class 10 to welcome Malafar. You are as welcome as the flowers in May, and we love you in the same old way. Says Hank Snow. A very warm good evening to one and all present here. Respected Chief Guest, Reverend Father Baiju CM, the Assistant Visitor of the Southern Indian Province of the Congregation of the Mission, Reverend Father George KK, the Principal of Udaipur, the Principal of St. Paul School, Udaipur, Mr. Subhaji Sharda, the Nagar Palika Chairman, Mr. Abrar Ahmed, the Advocate, Reverend Father Sebastian de Cruz CM, the Principal of St. Paul Secondary School, Reverend Father Christopher CM, the Vice Principal, Principals, Managers and Vice Principals of different schools of this vicinity who came over here, all the teaching and non-teaching staff of St. Paul Secondary School, all the participating and non-participating students of our St. Paul family, and my dear parents and well-wishers. We are delighted to offer the most hospitable welcome we can to our today's chief guest of this function, to Reverend Father Baiju Chittaparamban CM, the Assistant Visitor. Welcome, dear Father. I request to welcome Father with a bouquet. Thank you, dear Father. Now may I take this wonderful opportunity to extend a warm and a hearty welcome to Reverend Father George KK. Welcome, dear Father. I request to welcome him with a bouquet. Thank you, dear Father. I also would like to extend a hearty welcome to Mr. Subhaji Sharda, the Nagar Palika Chairman. Welcome, dear sir. I request to welcome him with a bouquet. Thank you, dear Father. Now I extend a warm and a hearty welcome to Mr. Abrar Ahmed, the Advocate. Welcome, dear sir. I request to welcome him with a bouquet. Thank you, dear Father. Next, I extend a warm and a hearty welcome to our beloved Principal, Reverend Father Sebastian de Cruz CM, and Vice Principal, Reverend Father Christopher CM. Welcome, dear Fathers. I also would like to extend a warm welcome to Reverend Fathers and
representing their respective congregations. Welcome, dear fathers and sisters. Lastly, I also would like to welcome our teaching and non-teaching staff, participating and non-participating students, and their parents and well-wishers. Welcome to each and every one of you gathered here. I remain thank you. Thank you, Ms. Uma, for welcoming all of us. Now I request the principal, Reverend Father Sebastian de Cruz CM, to take us all to the academic year 2021-2022 and to share with us all the glimpse of the fruitful session. A dream becomes a goal when action is taken towards the achievements. To be a contemporary center of learning means the integration of the gospel values and quality education while focusing on the needs of the children in a changing and a complex world. We shared our faith in love, and the staff of St. Paul's functioned together to help each student of our institution in reaching their heights. As it is rightly said, a man without education is like a building without foundation. Our school is the only ICSE school in the district which is affiliated to the CISCE Delhi, and a school which stands out with 100% result every year. Good evening to the respected dignitaries. It gives me an immense pleasure and pride to welcome all of you to witness the glimpses, achievements, victories, and aspirations of St. Paul's School, the academic year 22-23. May I now request the head boy Ishan and head girl Niyati to continue with the report. Management. Farewell of Father Anis. Our former principal, Reverend Father Anis Xavier CM, was given a fitting farewell as he got transferred from the school. He served the institution in the capacities of vice principal and principal for the past 4 years. A formal and appropriate farewell program was organized thereafter on 25th May 2022. The handing over ceremony was conducted and the former principal and vice principal handed over their responsibility to the new principal and the vice principal respectively. Jubilee celebration of the province. As in the year 2022, the congregation completed its 400 years, the Indian province its 100 years, the Southern Indian province its 25 years, and the CM Fathers with the HCC collaborators at Nimbahera completed its 20 blissful years. On 27 September 2022, an official program was planned, and on this great occasion, the new staff quarters were blessed and inaugurated. Principal's Day. On 28 January, the birthday of Reverend Father Sebastian de Cruz CM, the principal's birthday was celebrated with much enthusiasm and with the collaboration of the parents. National festivals. In the academic session 2022-23, we celebrated our national festivals like Independence Day, Gandhi Jayanti and Republic Day. On 15th August, Independence Day was celebrated at school. On this day, the winners of the Voice of St. Paul's. The Voice of St. Paul's participated in the program on this national day. A good number of parents became the part of the celebration. On 2nd October, Gandhi Jayanti was celebrated at school, in which students performed an act on the life of Mahatma Gandhi. On 26th January, Republic Day was celebrated at school, in which students participated in march past and band, in which students performed different patriotic song and dance. The chief guest was Sister Alfonsa FCC, the Provincial Maria Rani Province, Jodhpur. Orientation programs and counseling session.
Teachers Orientation. 2 orientation programs were conducted for the teachers. On 25th June for all the staff, and on 27th June a special orientation program was held for the newly recruited staff. The resource persons for the orientations were Father Dandy, Principal of St. Paul's School Rawat Bhata, Father Shijo, Principal of St. Paul's School Chittorgarh, and Mr. Abdul Sir. Student counseling session. 2 special counseling sessions for the student of classes 9th and 10th were conducted by Principal Reverend Father Sebastian D. Cruz CM. In this counseling session, Father Principal gave them various guidance like how to face the exam without fear, how to write the exam, and about the time management, etc. Father also emphasized on the excess use of social media as brighter as well as darker sides. Cultural Graduation Day. As our KG section students and 10th class students completed their primary and secondary education respectively, to appreciate the primary section, on 8th April the graduation day was organized, and on 9th April farewell was given to 10th class students. Investiture ceremony. On 4th July, the investiture ceremony was held in which the head boy, head girl and captain and vice captain of the different houses received their badges with their responsibilities. Green Day. On 23rd July, Green Day was celebrated in the school to bring awareness about the nature among the students. On this day, saplings were planted in and around the school premises. On the same day, inter-house singing competition, The Voice of St. Paul's, was organized. The chief guest was Reverend Father Paulson, the manager of St. Paul's School Chittorgarh. Inter-house Rakhi making, card making competition and fancy dress competition. Inter-house Rakhi making competition for the student from classes 1st to 5th. The culture program fancy dress competition on the theme Radha Krishna was conducted for the student of classes from nursery to 5th. Also, my favorite cartoon character event was conducted, in which students played the role of their favorite cartoon characters. It was conducted for the pre-primary section kids to bring out the creativity of the students. Inter-house Rangoli making, art and diya decoration competitions were also organized for the students by the cultural wing. Teachers' Day celebration. On 5th September, Teachers' Day was organized. On this day, students put up various creative programs for the teachers. Children's Day, Mother's Day celebration, elocution finale. On 14th November, Mother's Day was celebrated, in which duo dance competition was also organized. The theme of the duo dance was Family, the Heaven on Earth, in which it was announced that the top 3 pairs will get a chance to perform in the 15th annual day of the school, which is happening today. Today in this skit, we will witness the performance of the parent winners of the duo dance competition. Christmas celebration. On 23rd December, Christmas Day was celebrated at school, in which students performed various dances and skit on the birth of Jesus Christ. SPS Sports 2022. On 17th and 18th October, 2 days of sports program was conducted at the school ground, in which various games were organized by the sports wing, like football, kho-kho, dodgeball, relay race, etc. The chief guest of the event was Mr. Fulchand, the CI of the town. In the academic year 2022-23, a good number of students represented the school at district and state level. Tournaments were held like lawn tennis, basketball, kho-kho and football. Among these players, Disha Bhatt from class 7 for lawn tennis and Rashri Solanki for basketball were selected at the state level. This game fostered team spirits among the participants and make them disciplined, and we are sure that there will be increase in the times to come. Picnic. The school organized an exciting fun-filled picnic for the teachers and the students. The students were divided class-wise. The primary section kids were taken to the park where special games were organized for the children. Students from classes 1st to 4th were taken to Chittorgarh Fort where they saw so many historical places. Students from classes 5th to 10th were taken to Aravali Resort where students enjoyed the swimming pool facilities, rooftop dining, etc. And our teachers had gone to the God's own country, Kerala. And on the way back, they visited world's largest film city, the Ramoji Film City, Hyderabad. It was a 7-day trip planned by the management. Literary. In the academic year 2022-23, different inter-house competition like Hindi handwriting, poem recitation, inter-house English allocation and Hindi storytelling, paper reading, SPS allocation finale were conducted for the student to improve their reading, writing and speaking skills. Inter-school quiz competition. After having been conducted the quiz in different rounds and different sessions,
Two students, namely Sneha CB from class 9 and Gagan Dosi from class 8, were selected for the inter-school competitions. 27th November 2022, these students were sent to DePaul International Residential School, Mysore, to participate in the inter-school quiz competition on the occasion of Silver Jubilee of the Congregation of Mission. National Fair. On 26 September 2022, our students performed in Rashtriya Dasera Mela in Imbaira. As we conclude our report presentation of the academic section 22-23, we thank all the parents and well-wishers for your incredible support and collaboration. We are glad and very much excited and eager to share with the parents of the St. Paul's family that the Vincentian Society is trying its level best to achieve the dream of starting the construction of a new school building, and which will be updated with the 11th and 12th with the various branches, which will be according to the ICSE board pattern called the ISC. We only need the cooperation of the concerned authorities and alliance of the parents and benefactors. As soon as the necessary permissions are granted by the respected authorities, the society is ready and willing to fulfill the dream of St. Paul's School, Nimbada. Thank you all. हेलो हाँ मनोज भाई मोटे वो सेंट पॉल स्कूल प्रोग्राम है I take this wonderful opportunity to extend a warm and hearty welcome to our Circle Inspector of Police, Mr. Hulchand Meena. Welcome, dear sir. हाँ बोलो. Thank you. हेलो हेलो. Thank you, Father and his students, for presenting the report. We are really grateful to have you as our principal. Far and away, the best prize that life has to offer is the chance to work hard. At work, what doing? With this prize, full send. Let us start our prize distribution ceremony. Now, may I request our respected Reverend Father Baiju CM to come over the stage and address the gathering. Good evening to everyone. Honorable guest of honor for George KK, Principal of St. Paul School, Udaipur. Our special guest, the CA of Nimbahada, Mr. Fulchand. Our special guest, Subhashji Sharda, Municipal Chairman of Nimbahada. Honorable Advocate Abrar, Reverend Father Sebastian De Cruz, Principal of St. Paul School, Nimbahada, and Father Christopher, Vice Principal and Financial Administrator of the school. Invite the guests, respected fathers, sisters, dear parents, and my dear students of St. Paul School. At the very beginning of this session, I want to congratulate Father Sebastian, Father Christopher, our teachers, our parents and students on this wonderful day as they celebrate the 15th annual day celebration of St. Paul School. As we have heard in a few minutes back,
the glorious achievements of the school and its students in this academic year 22-23. On behalf of the society, on behalf of the President for Anil, the board members, and all the members of the society, I want to congratulate the management of the school, the teachers, and the students for these stupendous achievements they have this academic year. The theme of the 15th annual day celebration is life. And they have described that living in fellowship every day. It's a wonderful theme, and this is a theme that the school is proposing to the students of St. Paul and to the society around us. Live in hope, live in fellowship every day as a way to nation building. Here at St. Paul, the teachers and the management, along with the support of the parents of the children, are engaged in teaching, enabling, and guiding every student of this school to study, to grow, and to become the citizens, wonderful citizens, contributing citizens of this country. And this process of becoming, growing, and becoming a wonderful citizen and contributing citizen of this country happens in fellowship. Every student of a school, in fellowship with the management, the teachers, and the students, they engage in a process of learning and growing. And this fellowship invites us to reflect on two very important things. One is to give, the second is to receive. The fellowship that the school is proposing to the students is enabling them to receive as well as to give. Someone said very famously, no one is too poor that he has nothing to give. No one is too rich that he or she cannot receive anything. Every person has something to give. Every child, every grown-up person has something to give to the world, to the society. Whether they are poor or rich, young or old, everyone has something to give to the society. And at St. Paul, every child is able to give something from his or her to the students they're studying with them. At the same time, whether we are intellectually great or intellectually low, we're all here to receive something from others. And that's how we grow. This fellowship at St. Paul enables every student to give something from his or her life to others in their class and their school altogether. At the same time, be open to receive something from others. And this is how every kid is growing, every student is growing. And this is how these students are becoming the nation builders of today and tomorrow. And therefore, I wish the school management and the teachers who are enabling these students in this scenario of fellowship every day, every best in their efforts. At the same time, I wish every kid, every student in the school to make use of the opportunity the school is providing. It invites me to also reflect on
on the 15th year annual day of the school, how much school has grown. I know almost 4 years since an annual day of this kind ever took place. And the management, and about the teachers and the students are able to make this possible. The school has grown tremendously in the last 20 years. And I'm sure this growth of the school and the way the school has contributed to the growth of not only students but all the society in and around Nimbahara has happened because of the fellowship that they have built, they have nurtured. At this moment, on behalf of the society and the president of society, but to thank the Diocese of Udaipur for their tremendous support, encouragement, and all that they have been to us. The bishops of these 20 years, the priests and the religious of the Diocese of Udaipur, the sisters who are working with us here last 20 years, and many dedicated teachers, the parents of our students, the civil authorities, government authorities of the town, and our students. This growth has been a wonderful effort of fellowship, and I want to thank all of you for making St. Paul's School what it is today. I cannot forget that this growth happened because of the fellowship that the management of the school were able to build up. Right from Father Thomas, the beginning, till Father Sebastian and Christopher today, so many fathers have worked tirelessly to build and nurture this fellowship with all of you. And today, in a special way, I want to thank all of them for their tremendous effort in developing, at the same time nurturing this fellowship with the Diocese of Udaipur, the priests and religious of the diocese, the parents, the civil authorities of Nimbahara, and everyone. And thank them, and again wish them all the best as they continue in making this institution one of the best in this area. At this time, I want to also assure our parents and our students, as principal said in the report, it has been a dream for us to have a new academic block, administrative block for St. Paul's School. We were working hard on that. Lot of legal issues, government paperwork, and we have been working hard, and our management staff was working hard on that. And today, on behalf of society, I'm really glad to announce that in a few days or soon, that dream is going to become a reality. And I wish the school all the best as they continue in that process. I will just leave with a small message to our students. My dear students, St. Paul and his experience of living in fellowship every day reminds us of three very important values that we need to cherish in our life. One is to love. Fellowship invites us to love. Fellowship invites us to respect. Fellowship invites us to move forward in excellence. When we are engaged in fellowship with these three aims in our life, loving everyone with what we have, respecting everyone that we engage with, and moving towards excellence, definitely we can make school great, we can make our homes great, at the same time we can make our nation great. May this fellowship that you dream, may the fellowship that you nurture in this campus, may this fellowship that you ask the students to value in their life continue to make India one of the best and leading nation in the world.
So once again, I congratulate Father Sebastian and Father Christopher, the teachers and the sisters and all the parents and all the students in their wonderful achievements. And on this day, on behalf of society, I want to thank them and wish them all the best. Thank you very much. Thank you, dear Father. Now we request our respected Reverend Father Sebastian D. Cruz to honor chief guest with Upanna and Memento. Dear Father, now I request respected Reverend Father Baiju CM to give away the prizes to the rank holders. I stand before you to announce the ICSE Toppers 10th Result 2022. The first position is backed by two people, Presha Parekh and Tanisha Anjana, with 94% of marks. The second position is secured by Kanishka Joshi with 93.67% of marks. The third position goes to Mayank Jain with 90.16% of marks. And the fourth position goes to Rohan Sharma with 88.17% of marks. Fifth position goes to Abhishek Dakar with 87.67% of marks. Now I am going to announce the academic toppers class 5th to 9. Class 9, first prize goes to Unnati J with 94% of marks. The second position goes to Bhumika Sharma with 91% of marks. Class 8, the first position goes to Gagan Doshi with 94.8% of marks.
second position goes to Aditi Charan with 93.2% of marks. Class 7, the first prize goes to Ravi Thakur with 98.8% of marks. अरे मीनू भाई साहब The second position goes to Janvi Jaswani with 97.2% of marks. Class 6, first prize goes to Drishti Joshi with 98% of marks. The second position goes to Munira Bora with 97.44% of marks. Class 6, first prize goes to Rehiba Sainab with 98.68% of marks. And the second prize goes to Mohit Vaishnav with 97.68% of marks. Thank you, dear fathers. I also take this wonderful opportunity to extend a warm and hearty welcome to Mr. Suraj Kumar, Assistant Sub-Inspector of Police, Nibarda, and also the Principal and Vice Principals of DPS. Welcome, dear sir, as well as welcome, dear Principal and Vice Principal. Thank you. What about you? I am also fine. Can you guess who is coming next? No. Let me give the hint. Our next performance are the different kind of flowers, and together they make this one a beautiful garden. Oh, I understood. Our next performance are primary section kids. Give them a big round of applause. थोड़ी दूर लगे तो यार मच्छर घना खतरनाक है ये ब्लॉक ध्यान रखो To you say
के फ्लावर समझे क्या? फायर एम्बले, पुष्पा, पुष्पराज, मैं झुकेगा नहीं। आजा छोरे, आजा गोरे, आजा छोरे, नाचो 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 वीरे नाचो, नाचो 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 यार नाचो, नाचो 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 नाची तेरी जैसा टुकड़ा नाचो, नाचो 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 नाचो। Unbelievable and one of the best performance by you. Thank you, dear. Our institution has shaped our students to make wonder in all fields of academics as well as other curricular activities. Today, encouraging talents by presenting prizes is a duty to maintain zeal, to win more and achieve. It's my privilege to invite our Honorable Chief Guest, Reverend Father George Kiki, the Principal of St. Paul's Udaipur, to share his thoughts with us and give away the prizes to our students of classes 4 to 6 for their due dance performance. Respected Chief Guest, Reverend Father Baiju, the City Mayor, Subhashji Sharda, and Fulchandji Meena, Mr. Advocate Abrar, and all the dignitaries of the city, beloved parents, and my dear students. I shouldn't forget the staff of St. Paul's School Nimbahada too, to whom I extend my hearty wishes and greetings of the day. This your 15th annual day. I have been lucky to be associated with this school from the beginning of its inception in 2002. Father Thomas of Happy Memories have started this along with the FCC sisters to help out, who are still continuing to help here. After that, many principals have taken over, and now Sebastian is doing a commendable job. We should appreciate that, along with Father Christopher and the dedicated staff. It's seen here very clearly. The ambience of this place, usually when you come, you find a dry land here, and how fine it looks now with all these illuminations and this wide stage for children to perform. And the one item that they have already performed shows what is going to come now on this stage. Now, the theme of the day is life, and Father Baiju has explained it so well. And life is not just learning, but it's also living what you have learned. हमारे ऋषि मुनियों ने कह रखा है, हस्तस्य भूषणम दानम, कंडस्य भूषणम सत्यम, श्रोत्रस्य भूषणम शास्त्रम, आभूषणै किम प्रयोजनम। जब तक आप देना शुरू नहीं करेंगे, आपके कंगन कोई आभूषण नहीं होगा। हस्तस्य भूषणम दानम, कोई बड़े बड़े कड़े या सोने के हार वगैरह नहीं है हमारा आभूषण जो होना चाहिए। यहाँ पर जब हम बच्चों को एक सर्वांगीण विकास की ओर ले जाते हैं, तो उन्हें ये स्पिरिचुअलिटी भी सिखाना होता है, जो हमारे स्टाफ अच्छी तरह कर रहे हैं। जब हम कहते हैं, जो जैसे फादर ने भी कहा, and there is a saying in English, life worth giving is worth living. Unless and until you are able to give to the society,
your life is not worth living. That's the importance of giving. हस्तस्य भूषणम दानम. और जब देने हैं तो सबको देना होता है. And society is the most important thing that should grow. And along with it, others grow. No one grows individually. कोई भी अकेले अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ता है. और ये स्कूल भी हमें मालूम होना चाहिए. It's a miniature of the society that is outside. The culture of the society comes into the school. The discipline of the society comes into the school. And everything that is part of the society sweeps into the school and into the discipline of the children. So unless the society is disciplined, अगर सोसाइटी डिसिप्लिन बच्चों को नहीं देता, अगर पेरेंट्स बच्चों को डिसिप्लिन नहीं देता, तो स्कूल अकेला कुछ नहीं कर सकते हैं. रिमेंबर, हस्तस्य भूषणम दानम. देते रहें. जो भी हमारा कल्चर है, हमारा सच्चा परिवेश है, समाज का सही तरीके तौर तरीके जो है, वो सब बच्चों को सिखाया जाना चाहिए, दिया जाना चाहिए. तभी स्कूल along with the society will improve. सत्यम कंडस्य भूषणम. अब हम देखते हैं बड़े बड़े लोग बड़े बड़े हार डाल के घूमते रहते हैं अपने पैसा और पावर दिखाने के लिए. बट दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प इवन दैट पर्सन हु इज वेयरिंग इट, जब तक वो सत्य का साथ नहीं लेगा. सत्य ही है आपका अखंड का आभूषण. अगर आप सत्य के साथ नहीं रहेगा, सत्य नहीं बोलेगा, सत्य नहीं सिखाएगा अपने बच्चों को, और समाज में एक सच्चे व्यक्ति के रूप में अपने आप को प्रदर्शित नहीं करेगा, तब तक आप हार चुके होते हैं. हार नहीं, आप हार चुके होते हैं. आपका जो स्टेचर है वो सही नहीं होगा. कंठस्य भूषणम सत्यम. हमेशा सत्य बोलना, हमेशा सत्य के साथ रहना, सत्य के लिए जीना, और सच्चे रूप में सच्चा मानव बनके सच्चाई का प्रदर्शन करना. हम उसी के लिए बुलाए गए हैं. ये चीज हमें सीखना है और सिखाना भी है अपने बच्चों को. रिमेंबर, कंठस्य भूषणम सत्यम. और कोई हार नहीं, सोना नहीं, वज्र नहीं, मोती नहीं. और फिर ऋषि मुनियों ने यह भी कह रखा है, शस्त्रस्य भूषणम शास्त्रम. शास्त्रम हम जानते हैं स्क्रिप्चर्स, द होली स्क्रिप्चर्स. हमारे समाज में बहुत से धर्म हैं और हर धर्म का अपना अपना स्क्रिप्चर है, अपने धर्म ग्रंथ है. हमारा कानों के लिए आभूषण शास्त्र होना चाहिए, हमारा वही स्क्रिप्चर्स होना चाहिए, धर्म ग्रंथ होना चाहिए. हमें सुनना चाहिए धर्म ग्रंथ, पढ़ना चाहिए धर्म ग्रंथ, और उसे जीना चाहिए. तभी हमारा जीवन सुंदर बनेगा. और हर दूसरे धर्म का आदर करना भी हमें सीखना चाहिए, सिखाना चाहिए, अगर हम एक समरसता वाले समाज का निर्माण करना चाहते हैं. तो जब तक एक दूसरे के साथ लड़ते रहेंगे, तब एक सुंदर समाज का निर्माण कभी नहीं हो सकता. ये चीज भी हमें अपने बच्चों को सिखाना चाहिए, जिसकी कोशिश यहाँ पर होता रहता है. तो शास्त्र स्तोत्रस्य भूषणम शास्त्रम. अपने कानों का आभूषण स्क्रिप्चर है, शास्त्र है, धर्म ग्रंथ है, भजन है, कीर्तन है, जो भी हमें सच्चा रास्ता दिखाता है. जहां कहीं से भी हमें सच्चा ज्ञान मिलता है, उसे प्राप्त करने की इच्छा रखते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए. तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों और अभिभावकों, जब फादर ने अनाउंस किया कि ये स्कूल और आगे बढ़ने वाले हैं, एक नया बिल्डिंग भी इसके लिए बनाया जाएगा, तो मेरी इच्छा है कि जैसे आप लोग अभी तक इस स्कूल का सपोर्ट करते आए हैं, इस कार्य में भी शहर के माननीय व्यक्ति यहाँ पर विराजे हुए हैं, उनसे भी अनुरोध है आपके हाथ खोल के इन्हें मदद कर लीजिए, ताकि निम्बाहाड़ा में एक ऐसा स्कूल विकसित हो जो इस स्कूल की एजुकेशनल जरूरत को पूरी तरह आगे बढ़ा सके और पूर्ण कर सके.
आप सभी को मेरा नमस्ते, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक्स. Thank you, dear father, for sharing your thoughts. Now I request our principal, Reverend Sebastian Deputy CM, to honor the guest of honor with Uparna and memento. George KK for distributing prizes to our students. I am here to announce the academic toppers of class 1 to 4 and duo dance. Class 4, first position backed by Mani Ladda with 98.82% of marks. The second position goes to Devansh Bensal with 97.13% of marks. Class 3rd, the first prize goes to Jumana Bora with 98.68% of marks. The second position goes to Insia Bora with 98.13% of marks. Class 2nd, the first position goes to Pritesh Ahuja with 98.76% of marks. The second position goes to Gunavan Singh with 98.65% of marks. Class first position goes to Diya Maheshwari with 99.23% of marks. And the second position goes to Samre with 98.96% of marks. Duo dance competition. The first position is backed by Mrs. Maya Chungwani. The second position goes to Mrs. Shivani Goswami. And the second position goes to Pritesh Ahuja and Mrs. Preeti Ahuja. The third position goes to Dr. Deepa Ram. And Shivansh Bukhan. Thank you, dear fathers.
The biggest reward for a thing well done is to have done it. So I request Mr. Subhaji Sharda, the chairman of Nagarpalika Nimbaiheda, to come on the stage for prize distribution. निम्बाहेड़ा शहर में सेंट पॉल स्कूल के इस 15वें वार्षिक उत्सव कार्यक्रम की आप सभी को, सेंट पॉल स्कूल प्रबंधक को, बच्चों को, अभिभावकों को बहुत 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 शुभकामनाएं। आज इस कार्यक्रम में हमारे माननीय मंत्री महोदय उदयलाल जी आंजना मुख्य अतिथि के रूप में आने वाले थे। आवश्यक कारणों से वो आज निम्बाड़ा शहर में नहीं आ पाए। उनकी अनुपस्थिति में मैं सुभाष चंद्र शारदा आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। मैंने अपने शब्दों में निम्बाहेड़ा के लिए शहर बोला, कहीं आप लोगों को अनुचित तो नहीं लगा? मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा, मैंने हमारे अपने क्षेत्र के लिए शहर शब्द उपयोग में लिया, आप लोगों को कहीं अनुचित लगा या सही लगा? मैं आपका समर्थन चाहूँगा। क्या मैं इस क्षेत्र के लिए शहर बोल सकता हूँ? आप लोगों का समर्थन चाहूँगा। धन्यवाद। किसी भी शहर की पहचान होती है चौड़ी चौड़ी सड़कें, चमचमाती रोड लाइटें, उस शहर की सफाई व्यवस्था, उस शहर के अंदर उच्च स्तरीय संपर्क सड़कें, उस शहर के अंदर उच्च स्तरीय चिकित्सा व्यवस्थाएं, उस क्षेत्र के अंदर उच्च स्तरीय शैक्षणिक व्यवस्थाएं, वो क्षेत्र शहर के रूप में कहलाया जाता है। जहाँ थोड़ी सी कम सुविधाएं होती है उसे हम कस्बा कहते हैं, जहाँ कम सुविधा और उससे कम सुविधाएं होती है उसे ग्रामीण क्षेत्र कहते हैं। आज हमारे क्षेत्र ने उन सभी चीज़ों को हासिल किया है कि हम लोग हमारे क्षेत्र को एक शहर के रूप में कह सकते हैं। और ये केवल हम लोग नहीं, जब बाहर से आने वाला कोई हमारे क्षेत्र को शहर कहता है तो हमें बड़ी खुशी होती है कि हमने उन सभी सुविधाओं को, उन सभी विकसित सुविधाओं को प्राप्त करने का प्रयास किया है कि हम हमारे क्षेत्र को शहर का तमगा दे सकें। मैं इन सब चीज़ों के लिए आज इस कार्यक्रम में अनुपस्थित हमारे माननीय मंत्री महोदय उदयलाल जी आंजना का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस क्षेत्र को शहर के रूप में विकसित करने का जो सपना देखा आज वो पूर्ण होने जा रहा है। मैं हमारे क्षेत्र की, निम्बाड़ा क्षेत्र की जनता का धन्यवाद दूंगा जिन्होंने हम लोगों को सहयोग और आशीर्वाद देकर इस लायक बनाया कि हम इस क्षेत्र को शहर के रूप में विकसित कर सकें। मैं आज इस कार्यक्रम में सेंट पॉल स्कूल को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस माहौल में आकर के हमें उस शहर की, उस विकसित शहर की याद दिलाई। इस माहौल के अंदर बैठा हुआ हर शख्स जो कि पुराने निम्बाड़ा से यहाँ आया है, थारे मारे में से इस इंग्लिश माहौल के अंदर से आया है, उसको धन्यवाद दूंगा जिन्होंने हमारे बच्चों को जिस विश्वास के साथ वो इस मंच पर अपना प्रदर्शन कर रहे थे, जिस आत्मविश्वास के साथ अंग्रेजी का प्रयोग कर रहे थे, वो एक विकसित क्षेत्र की पहचान होती है। उसके लिए सेंट पॉल स्कूल का बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम में हमें जो सम्मान दिया उसके लिए बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। जय हिंद।
आ गई फिर सर I am here to announce the academic toppers of KG sessions and house champions. UKG, the first position goes to Ayansh Kaushik with 97.75% of marks. Position goes to Divija and Sahara with 97.12% of marks. LKG, the first position goes to Mahanur Sheikh with 98.37% of marks. Position goes to Fariga with 97.12% of marks. Nursery, the first prize goes to Levi Shahuja with 100% of marks. And the second position goes to Sahara Bora with 99.25% of marks. Thank you, Mr. Sardaji, and thank you, Father. May I now request Mr. Suraj Kumar, ASI, to come on the stage and distribute the prizes. अरे भाई साहब अन्य ये लिया था ये चढ़वा को यहाँ रह जाता होना क्या क्या खत्म भैया ऑर्डर तो अभी है The 2022-23 academic year, we divided the students into 4 groups and we conducted inter-house competitions. And the third position is backed by Emerald House with 755 points. I call upon Unnati Jain and Aftaz Hussain, the captain and vice captain of this house, please come to the dais and receive the trophy. The second position is backed by Jasper House with 788 points. I call upon Parul Kanwar and Lakshya Doshi to the stage for receiving the trophy. Now the first position or the championship trophy is backed by the Sapphire House with 997 points. I request the captain and vice captain, please come to the stage. Manvi Sharma and Harshvardhan Singh to receive the trophy. Congratulations for the winners. Thank you, sir. Thank you, Father. जिंदगी और मौत तो ऊपर वाले के हाथ में, जिसे ना तो आप बदल सकते हैं ना हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिसकी डोर ऊपर वाले के हाथ में। कौन कब कैसे उठेगा ये तो कोई नहीं बता सकता। हे शीदा, क्या तुम्हें पता है हमारी नेक्स्ट परफॉर्मेंस क्या है? हाँ, now we would like to bring your attention to the next event where the students from our school and the winners of your dance competition will be presenting a theme, life and for living. I
for in. F for fellowship. E for everyday. Therefore, the theme life means living in fellowship every day. Welcome dear students. Yeah. Dance refreshes your mind, makes you confident, kill the negativity with you. So, I would like to invite our dance group for their classical dance. Now I request District Collector to honor Mr. Lakshit for making the Amritar.
उसके लिए माचिस नहीं थी मैम। घर में एक भी माचिस नहीं थी? एक थी लेकिन मंदिर में रखी थी। तो मंदिर से ले लेते। नहीं ले सकता था क्योंकि मैं नहाया नहीं था मैम। अब तुम नहाए क्यों नहीं थे? क्योंकि तो मोटर चला लेते। मोटर कैसे चलाता मैम? अभी तो क्या बात है, जब भी मैं तुम लोगों से कुछ सवाल पूछती हूँ हमेशा तुम बहाने बनाते हो। 4 दिन बाद तुम्हारा एग्जाम है और तुम्हारी क्या प्रिपरेशन है? हे भगवान, अब इनका क्या करूं? The teacher is absent and children are happy to get a free period. Now we will see the perception of exam in Bollywood style, where every child
Children have done with their exams and are anxious to know their results, whether they'll be but right now their anxiety is at highest peak and they are anxious their performance. लगता है ये क्यों मुझे मेरे सपनों में अपना मुझको बना के मुझ पे तू कर Have been announced. Not all have been lucky to achieve their goals. Though all of us are aware that failure is the stepping stone to success, right now they are not happy with their performance. टूटे कोई सपना लागे जग सुना सुना लागे कोई रहे ना जब अपना जग सुना सुना लागे जग सुना सुना है ये क्यों होता है जब ये दिल होता है कोई सिसक के हवाएं जग सुना लागे छल से जो टूटे कोई सपना जग सुना सुना लागे जग सुना सुना लागे. And now it's time to celebrate. These are the achievers and their happiness is boundless. They are on the seventh sky. नमस्कार मैडम जी. नमस्कार, बैठिए. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. मैडम क्या रहा लक्षित और जिया का रिजल्ट? ये लीजिए लक्षित का रिजल्ट. इसमें क्या है? आपका बेटा तो फेल हो गया है. क्या फेल हो गया? क्या बात है, आजकल आप लक्षित पर ध्यान नहीं देते. जिया का रिजल्ट देखिए, क्लास में टॉप रही है. अरे मैडम क्या करें, मैं घर पर रहता ही नहीं हूँ तो ये पढ़ता ही नहीं है. इसका ध्यान तो बस खेल खेल, दिन भर खेल में है. अभी आप बिटिया रानी को ही देखिए, ये भी तो अपना काम समय पर करती है, समय पर पढ़ती है. ठीक है, आप लक्षित को थोड़ा और समझाना और ध्यान रखना. अरे भाई साहब, लक्षित और जिया का रिजल्ट क्या रहा? अंकल मैंने तो क्लास में टॉप किया है. अरे वाह. और लक्षित का क्या रहा? कुछ नहीं, पूरे साल फीस भरता रहा और इसने पढ़ाई नहीं की और फेल हो गया. लेकिन मेरी बिटिया रानी ने तो पूरी क्लास में टॉप किया है. उसने मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया. अच्छा, यह तो वही हुआ, काला अक्षर दाल बराबर. अरे अंकल, काला अक्षर भैंस बराबर होता है. अरे हाँ हाँ, वही वही. सब जगह में ही नाक कटा रखी है, कुछ पढ़ना लिखना नहीं है. हाँ सही है, मैं तो इसे होशियार समझता था. ये तो वही हुआ, खोदा पहाड़ और निकला खरबूजा. अरे अंकल, चलो पापा, मुझे तो भूख लगी है. ये अंकल तो सब गलत बोल रहे हैं. चल तुझे घर पर बताता हूँ. सब जगह में नाक कटा रखी है, कुछ पढ़ना लिखना नहीं है. मत मारो पापा. पापा मत मारो. मैं पढ़ाई करूँगा. माँ, पापा भैया को मार रहे हैं. क्यों, क्या हुआ? जल्दी चलो.
भतीजा है। ऐसा क्या किया इसने? देखो इसने क्या किया है, तुम्हारे लाड प्यार ने बिगाड़ रखा है इसको। लो तुम ही संभालो इसको। बेटा क्या करते हो, क्यों नहीं पढ़ाई करते हो? रो मत बेटा, कोई बात नहीं, अगली बार ज्यादा मेहनत करना। मैं तुम दोनों के लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। रामू, रामू। जी मालिक, आया। जी मालिक। कल से रामू इसे खेत पे लेके जाना। जी मालिक, कल से इससे गोबर उठवाऊंगा। चलो लक्षित बाबू, अपन खेत पर चलेंगे। अच्छा लक्षित बेटा, बताओ ये किस चीज का खेत है? काका यह कपास का खेत है। तो इससे क्या बनता है? इससे कपड़े बनते हैं। अच्छा, तो बताओ इनमें से पजामे का पौधा कौन सा है? क्यों काका, क्यों मजाक करते हो? फेल हो गया हूँ पर इतना तो समझता हूँ मैं। अरे लक्षित बेटा, मैं तो तुम्हें हंसाने की कोशिश कर रहा था।
चमक चमक देखो चमक चमक देखो बिजुली चमके मन धड़काए बदरवा मन धड़काए बदरवा अजी सुनते हो? क्या हुआ भाग्यवान? 3-4 दिन हो गए लेकिन अपना बेटा अभी भी उदास रहता है। अरे तो मैं क्या करूं? इसे ही इसका जीवन बनाना पड़ेगा। स्कूल भी खुल गए हैं, क्यों ना हम इसे स्कूल भेज दे। कल ही स्कूल से फोन आया था, इसे पिकनिक पर ले जा रहे हैं। मैं नहीं जानता, तुम्हें इसे बिगाड़ना है तो बिगाड़ो। अरे आगे पीछे तो इसे स्कूल में ही जाना है, तो जो होगा देखा जाएगा। आप सभी को पिकनिक के रूल्स फॉलो करने होंगे। सबसे पहले आप इधर उधर नहीं जाएंगे, टीचर्स की नज़रों के सामने ही खेलेंगे। तो क्या आप सबको समझ में आ गया? यस मैम। अब आप सब इधर आइए, ये देखिए ब्यूटी ऑफ नेचर। ये कितना खूबसूरत है। हाँ, तो आप सब यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। हाँ।
Yesterday I observed one child was very upset. Who was that child, madam? He was Lakshit. Okay, he was Lakshit. What happened to him? Because of his result, he was upset. Please call his parents. I want to meet them. नमस्कार साहब। साहब आपने हमें बुलाया था, क्या बात हो गई? बैठिए बैठिए। आपको तो पता ही होगा ये फेल हो गया। मुझे लक्षित का रिजल्ट दिखाइए। वो दैट इज ग्रेट, ये तो बहुत अच्छा है। आपका बच्चा तो टैलेंटेड है। टैलेंटेड है, पर ये आप क्या कह रहे हैं? ये तो फेल हो गया। आप अच्छे से देखिए। क्या आपने नहीं देखा? आपके बच्चे कंप्यूटर में 99 आउट ऑफ 100 आए हैं। क्या आपको नहीं लगता इसकी कंप्यूटर में ज्यादा रुचि है? आप ही बताइए हमें क्या करना है। इसे कंप्यूटर के फील्ड में आगे भेजो। लक्षित, कम टू मी। डू यू लाइक टू मेक योर करियर इन कंप्यूटर? Yes, sir. You have done well in computer, my dear child. You can select this subject as higher studies. Okay? Okay, sir. NEP के तहत इसे हम आगे बढ़ाते हैं। आपके ज्ञान की वजह से ये अपने जीवन में कुछ कर पाएगा। तो इस तरह एक बार फिर से लक्षित को नई दिशा मिली। सभी ने कुछ न कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। So really, I mean it. और आज मुझे बार-बार एक ही ख्याल आ रहा है।
शुरू हो गई मामो। की बाहों में अब है ये जिंदगी, किरणें हैं सांसों में, बातों में रोशनी। सूरज की बाहों में अब है ये जिंदगी, किरणें हैं सांसों में, बातों में रोशनी। और इस तरह लक्षित अपने फील्ड में कड़ी मेहनत करता गया और वह एक दिन बड़ा आदमी बनकर फॉरेन चला जाता है। लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। बड़ी खबर की करेंगे बात है कोरोना अपडेट की। तो राजस्थान में आज एक बार फिर से कोरोना विस्फोट देखने को मिला। करीब 200 के आसपास जो है ये संख्या पहुंच चुकी है केसेस की। पिछले 24 घंटे में 197 पॉजिटिव मरीज मिले। लक्षित अपने देश में कोविड-19 के बढ़ते हालातों को देखते हुए अपने देश वापस जाने का निर्णय लेता है। Hello, yes, this seat number is B11. Yes, this seat is yours. I am shifting that side. No, you sit here only. I am going there. Are you from Delhi? No, I am from Jaipur and I am going to Jaipur. जयपुर तो राजस्थान में है। अच्छा, यह फ्लाइट राजस्थान होते हुए जाएगी। मैंने बहुत सुना है राजस्थान के बारे में। वहाँ तो हर जगह रेत ही रेत है। अरे नहीं, वहाँ तो और भी कई चीजें हैं। राजस्थान की संस्कृति, खान पान, पहनावा और विरासत सब बहुत अलग है। राजस्थान की धरती वीरों और वीरांगनाओं के त्याग और बलिदानों से भरी पड़ी है।
चुप ना जाओ जी, मन दीद कराओ जी, अरे क्यों तरसावे हो, मन शकल दिखाओ जी, हरी शरारत सब जानू मैं तो हरी, अरसले उन भंगा दी मैं का लगे मन बड़ा में ताकी दो कहीं पर ठंडा में भारी चांदनी मन दामन में भागी खुशी रे बड़ा में ताकी दो कहीं पर ठंडा में भारी चांदनी मन दामन में भागी खुशी रे आखिरकार मैं अपने देश आ ही गया। बस जल्दी से मैं अब अपने घर चला जाऊँ। मैं सबसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। अरे ये क्या, घर पर तो ताला लगा है। यहाँ पड़ोस में पूछता हूँ, अरे कोई है घर में? हाँ, कौन है? क्या हुआ भैया? अंकल, घर पर ताला लगा है, सब कहाँ है? लो, मान ना मान, मैं तेरा सुल्तान। मैं तेरा सुल्तान? अरे सुल्तान नहीं अंकल, मैं तो लक्षित हूँ, दयाराम जी का बेटा। भूल गए क्या? लक्षित? कौन? अच्छा, लक्षित बेटा तुम हो क्या? इतने बड़े हो गए हो, आ गए क्या विदेश से? और कैसा चल रहा है? बस अंकल बढ़िया। आप कैसे हो? यहाँ भी सब ठीक है। कल तक तो सब यहीं थे, पर पता नहीं सुबह से कोई दिखा नहीं। ठीक है अंकल, मैं कॉल करके देखता हूँ। ठीक है बेटा। हेलो। हेलो। माँ कहाँ है? तुम सब कहाँ हो? माँ ने फ़ोन क्यों नहीं रिसीव किया? सब ठीक तो है ना? नहीं भाई, सब ठीक नहीं है। माँ को कोरोना हो गया है और वो हॉस्पिटल में है। ये क्या कह रही हो तुम? घबराओ मत, मैं आ गया हूँ ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं हूँ कोरोना, मुझे खत्म करना तुम सबकी बात नहीं। तुम सबने मुझे फैला तो दिया, मगर मुझे मिटा नहीं पाओगे। बेटा, रोज न्यूज में डॉक्टरों के बारे में देखकर अब डर लगता है। तुम ठीक तो हो ना? हाँ। नन्ही सी हंसी, भोली सी खुशी, फूलों सी वो बाहें भूल गए। जब देश ने दी आवाज हमें, हम घर की राहें भूल गए। हम सोए नहीं कई रातों से, जाने वतन सोचा में बुझे। हमें नींद उसी दिन आएगी जब देखेंगे आबाद तुझे। इस कोरोना के डर से लोग सिर्फ एक टच से घबराते हैं। हम डॉक्टर्स हैं, रोज मौत से हाथ मिलाकर आते हैं। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा। इतनी
दिल की आरज़ू। अस्पताल में लोग इस बीमारी से अकेले लड़ते वक्त अपने परिवार का साथ चाहते हैं, पर ऐसे हालातों में हम ही हैं उनके डॉक्टर, हम ही उनका परिवार, हम ही उनकी हिम्मत और हम ही उनकी उम्मीद। मजबूर हुई जब दिल की दुआ तो हमने दवा से काम लिया। वो नब्ज नहीं फिर थमने दी जिस नब्ज को हमने थाम लिया। बीमार है जो किस धर्म का है हमसे न कभी ये भेद हुआ। सरहद पे जो वर्दी खाकी थी अब उसका रंग सफेद हुआ। जवान अपनी जान की बाजी लगाकर सरहद की सीमा रेखा की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन भारत की जीवन रेखा की जिम्मेदारी अब हमारे हाथ है। अभी कल की ही तो बात है, लोग स्कूटर की पीली रोशनी से हमें नहलाते थे, लोग गाड़ियों की हॉर्न से कान में संगीत खो जाते थे। वैसे तो हम बेजान हैं, पर सड़कों की चहल गर्मी से हम भी जिंदा नजर आते थे। जाने वक्त ने कैसा काम किया है, वक्त ने काम दिया है तो वक्त ही मलहम लगाएगा। हमें यकीन है वक्त में फिर से हमारा पुराना वक्त लौट आएगा। भैया हम लोग कितने बिजी हैं, मैं आपसे ढंग से बात तक नहीं कर पाई। कैसा चल रहा है आपका काम? अरे जिया, क्या बताऊं, बहुत अच्छी लाइफ चल रही थी। मैं तो अपने काम में इतना व्यस्त था कि मेरे देश को मेरी इतनी जरूरत थी और मैं समझ ही नहीं पाया। भैया आप कुछ कर तो रहे हो, मैं तो कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। ऐसा क्यों कर रही हो तुम तो शुरुआत से ही बहुत होशियार रही हो। एक समय था स्कूल का जब तुम स्कूल में टॉपर रहती थी। पर मैं तो कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मैंने डॉक्टरी तो कर ली है, लेकिन रिसोर्सेज की बहुत कमी है हमारे पास। भैया हमारे बचपन के दिन भी कितने अच्छे थे ना, बहुत याद आते हैं वो दिन। हाँ जिया, वो भी क्या दिन थे जब हम हमारी माँ के साथ मस्ती किया करते थे, और आज हमारी माँ की ऐसी हालत में हम हमारी माँ के साथ नहीं हैं। हाँ भैया, और आज देखो हम हमारी माँ से मिल भी नहीं पा रहे हैं। उठा लेना
माँ नहीं रही जिया। रो मत जिया, रो मत। अब हमें ही अपने आप को संभालना पड़ेगा। उठ उठ, अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। हाँ भैया, अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। हमें अपने आप को संभालना पड़ेगा। जिस तरह हमने हमारी माँ को खोया है, उस तरह कोई और बच्चा अपने परिवार को ना खोए। इसलिए मुझे वैक्सीन बनानी है। मैं ऐसे अपने देश को तड़पता नहीं देख सकता। तुम तो अपनी टीम के साथ काम शुरू करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है भैया, हम अपनी टीम से बात करके हमारे काम की शुरुआत करते हैं। मैं भी एक ऐसे ऐप पर काम कर रहा हूँ जो भी इस महामारी से संक्रमित है, उनका पता हमें घर बैठे चल जाएगा। वाह भाई, कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के मधुमती होत सुजान। अरे अंकल, अभी भी आप वैसे ही है क्या? करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, ऐसा होता है। अरे हाँ हाँ बेटा, वही वही। आज मुझे अपने दोनों बच्चों पर गर्व हो रहा है। मुझे जिया पर तो शुरू से ही नाज था, एक दिन कुछ बड़ा करके दिखाएगी। लेकिन लक्षित, आज तुमने जो किया है वह काबिल तारीफ है। शाबाश मेरे बच्चों। अरे वाह भाई वाह। तो वो कहते हैं ना कि अंत टला तो सब बला। अरे अंकल, आप सभी को सैंडपुर परिवार की ओर से एक संदेश। हमें अपने बच्चे को उसी फील्ड में आगे बढ़ाना चाहिए जिस फील्ड में उसका इंटरेस्ट हो, ताकि बच्चा अपने जीवन में उन्नति कर सके। धन्यवाद। हिंदुस्तान
हमें अपने बच्चे को our life has shaped us into the person we are today. So give thanks to the Lord for His goodness and His love and us forever. There is an end of everything, but we believe that there is never an end, but always the beginning of this continued for today. So I would like to invite our respected Principal Reverend Father Sebastian Tigru CM to propose the vote of thanks. Well said. Thank you is really a prayer that can be felt and yes, must be felt by the heart. Today I feel incredibly honored and privileged to extend a most sincere and fitting word of thanks
on this special occasion of our 15th day of celebration. Life, our theme well refers living in fellowship every day. It means some days can be great and some days can be worst. Great days gives us happiness and worst teaches us many lessons. In both the ways, we are achieving something when we are in fellowship or united each other. For this great achievement, I sincerely thank the Almighty, the Creator and the Preserver. Let's all pause for a moment and thank the Lord for all the blessings. On behalf of the St. Paul's family, I convey my profound regards and wholehearted cheers to our chief guest of today's evening, the Honorable, the Reverend Father George K.K. Thank you, sir. We would fall short for your pleasant presence and active participation. A chair has of its legs to stay still to bear our weight. Similarly, if we have support from even one person, the door of our darkness would be wide open for growth. For this growth, guidance, support and motivation, we are especially thankful to our beloved Reverend Father George K.K., the Principal St. Paul's School, Udaipur. Thank you, dear Father. Anything is possible when you have the right people there to support you. For this great support, I would like to thank our Reverend Father Baiju Chittuparamban CM, the Assistant Visitor of the Southern Indian Province of the Congregation of the Mission. Many beautiful things cannot be seen or touched. They are felt with the same heart. What you have done for us is one of them. I would like to thank you, dear Father, for presiding over this function. Thank you, dear Father. I sincerely thank all the principals, vice principals and managers, respected fathers, sisters, all the honorable dignitaries who have taken their valuable time and ensured their presence here today. Thank you, dear principals, vice principals and managers. A strong foundation is the key to creating long-term successes. For this successful annual day, tremendous are the share of Reverend Father Christopher CM, the Vice Principal, who always works for the good and betterment of this institution and always stand by my side. His tireless efforts are beyond words. Thank you, dear Father Christopher. For a successful event, there are always uncountable individuals who volunteer the leaderships even after they understand it's going to cost many sleepless nights to touch to its successful glory. So my special thanks to the core committee of the 15th annual day. Great was the role played by you. Thank you, Mr. Vijender, Mr. CBMT, Mrs. Manisha Kumawat, Mrs. Rajani Lada and Mrs. Smita Karte. Thank you, dear staff. Now I would like to thank all the teaching and non-teaching staff for their support. Very especially Mrs. Om and Mrs. Mahima Joshi, the staff coordinators and other assistant coordinators, and the teachers in charges of all the dance programs. Thank you, dear teachers. If this event is successful, then I must sincerely convey my sincere words of appreciation and gratitude to the WOW events by Mr. Vijender and team for these wonderful stage arrangements and the other related decorations and ideas. Thank you, dear sir and team. I also thank our choreographers, namely Ms. Jayasri, Mr. Mahend Pankwar, who worked hard for this day, and special thanks to our light and sound team as well as the video and photographies. Thank you everyone for your sincere cooperation. Last but not the least, now I would like to thank all the parents and guests who gave their time and support for this day. I would also like to thank all my beloved, charming, energetic students who made this day a successful one. Thank you everyone. Once again, thanking you all. I remain. Thank you.
Your attention please. I request all the teaching and non-teaching staff please come off the stage for a photo session. Thank you. I request all the teachers to come onto the dais. All the teachers. Zambia.
तेरी मैं ताजा कर नबावा अखियां विचों लौंदियां बरसात